Namaskar. I welcome I welcome you all to the online online discussion on our Facebook page on transformation of Jallianwala Bagh into a theme park. You know, all of you know, Jallianwala Bagh is not a amusement garden. It's a historic place. It tells about the united protest against the oppression. It tells about the atrocities of ruling dispensation against common man. It tells about the inspiration it created for common people. It inspired not only it inspired common people, it inspired Shahid Azam Bhagat Singh, it inspired Shahid Udham Singh, and many revolutionaries who sacrificed their life for the sake of our country. When this Jallianwala Bagh is being transformed into a theme park, it raises question among progressive people and democratic minded people. On this critical juncture, we are organizing this online discussion, and we have with us distinguished scholars of our country. We have with us Professor Chaman Lal. He served as a visiting professor in the universities of West Indies, Trinidad and Tobago. He was a professor in the Center for Indian Languages at JNU New Delhi. He has written and translated many books in Punjabi, Hindi and English. He is a noted scholar on Shahid Azam Bhagat Singh and the revolutionary poet Pas. I welcome you, sir, to our online discussion. We have with us Professor K.L. Tuteza. He is a historian, a retired professor of Kurukshetra University, Haryana. As an academician, he wrote many books and many papers. To mention a few, he edited Young India of Lala Rajpat Rai. He wrote Tagore and Nationalism. Particularly, I was inspired by his writing, Jallianwala Bagh, a critical juncture in Indian national movement. He is also a committee member of Jange Azadi Memorial Committee, a project whose declared objective is to connect younger generation with patriotism. This Jange Azadi Memorial is situated at Kartarpur at Jalandhar. I welcome you, sir, to our online discussion. We have with us noted journalist and social activist Sri Son Singh Bhangu. During his career, he raised many questions, reported many things, many positive points. He raised many problems of many social problems. He is also working for social upliftment of many different sections of our people. He is fighting against oppressed, fighting for oppressed, and fighting against injustice also. We welcome you, sir, for our online discussion. At first, Thank you. we would like to know the views of Professor Chaman Lal on the incident in which BJP-led central government has transformed the Jallianwala Bagh, historic Jallianwala Bagh, into a theme park. Now I request to Professor Chaman Lal to deliver his talk. Good evening, greetings to all your viewers and listeners. And we are discussing a very serious issue this evening. In fact, I was shocked
a few days ago when I was sent a brochure issued by Government of India for the inauguration of what some people call renovation, some people call restoration, some people call whatever. But that brochure was shocking for me. Then actually I visited Jallianwala Bagh when the 100th commemoration event started on 13th April 2018. By that time also there were some changes. In fact, one gallery was already there. Udham Singh statue was already installed there. लेकिन बाहर बाग के बाहर जो है एक वो जो है बहुत सारे लोगों का सफ़ेद बुत लगाया हुआ था जिसमें नीचे नाम दिए हुए थे शहीदों के, लेकिन वो बाग के बाहर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसी वक्त मुझे मालूम नहीं था कि टुटेजा जी जंग आज़ादी म्यूज़ियम के करतारपुर के एडवाइजरी बोर्ड में हैं। मुझे हरीश शर्मा का तो मालूम था लेकिन आपका मालूम नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं वो भी विज़िट करके आया था, तो उसका भी इन ए वे मैं अब आप इसी सिलसिले में कंटेक्चुअली उसका भी जिक्र करूँगा। ये हिंदुस्तान का जिसको कहना चाहिए कि मिसफॉर्चून है कि हमारे यहाँ हिस्ट्री के साथ जो मजाक किया जाता है, जो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जाता है, जो हिस्ट्री को माइथोलॉजाइज किया जाता है, ये जितना हिंदुस्तान में होता है मुझे नहीं मालूम कि दुनिया के किसी भी और मुल्क में ऐसा होता होगा। मैंने इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग। मैंने जलियांवाला बाग अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो ये कोई बाग था ही नहीं। दिस वाज ए लैंड, एम्प्टी लैंड। एक कुछ हिम्मत सिंह जल्लेवाला की लैंड थी, तो वो गोल्डन टेम्पल के नज़दीक है, तो लोग वहाँ गोल्डन टेम्पल जाते हुए आते हुए वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते थे। वहाँ कुआं भी था पानी वानी पीने के लिए, और कई बार फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वहाँ पॉलिटिकल मीटिंग वगैरह भी होती थी, जैसा कि जब ये 13 अप्रैल 1919 का कांड हुआ, वो उस पॉलिटिकल मीटिंग के वजह से ही ये सब हुआ। तो उसमें मैं उस सारी कहानी में नहीं जाऊंगा, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सब लोगों को मालूम है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। उसकी बैकग्राउंड में भी 5-7 दिन पहले जो चल रहा था वो भी ज़्यादातर लोगों को मालूम है। लेकिन ये उस वक्त एक ट्रस्ट बनाया गया था, मैंने इस भयंकर हत्याकांड के बाद। मेरे ख्याल में दुनिया में जो एंटी इंपीरियलिस्ट या एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के आइकॉन बने हैं, तो दुनिया में एक ये आइकॉन, हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा आइकॉन है ही, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के एशिया और अफ्रीका में और बहुत सारे मुल्कों में जो आइकॉन्स बने, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल आइकॉन्स इन द वर्ल्ड। तो मैंने जलियांवाला बाग को इतना बड़ा आइकॉन बन गया कि उसके बाद से आज तक मान लीजिए कि जहाँ भी कोई पुलिस का जुल्म होता है तो उसके लिए एक और जलियांवाला, दिस इज ए कॉमन फ्रेज कि एक और जलियांवाला। मैंने हिंदुस्तानी सरकार भी जो करती है और अंग्रेज सरकार भी जो करती थी, तो वो उसके लिए एक और जलियांवाला, इट हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिप्रेशन, स्टेट रिप्रेशन। वो चाहे वो कॉलोनियल स्टेट का रिप्रेशन था, चाहे वो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट का रिप्रेशन था, उसके सबके खिलाफ रेजिस्टेंस का एक वो बना। तो उस वक्त मैंने कांग्रेस पार्टी ने 1920 में ही एक ट्रस्ट बना दिया था एक यादगार बनाने के लिए। मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे, और षष्ठी मुखर्जी जिसकी तीसरी पीढ़ी अभी भी इसकी सेक्रेटरी चली आ रही है। तो षष्ठी मुखर्जी, क्योंकि उनकी फैमिली के लोग 13 अप्रैल को वहाँ पे उसमें थे बाग में, शायद उनमें कोई शहीद हुआ था या कम से कम वो मौजूद थे, तो उनको उसमें सेक्रेटरी बनाया गया था। और भी ट्रस्ट में बहुत सारे लोग थे, शायद महात्मा गांधी भी थे, तमाम लोग थे। वो एक यादगार बनाना चाहते थे, अंग्रेज़ों ने उसकी इजाज़त उस समय नहीं दी।
मैंने उसको अंग्रेज तो चाहते थे कि कपड़ा मार्केट बना के इसको मिटा दिया जाए पूरी तरह से, वो तो नहीं हो पाया। उसने कांग्रेस पार्टी ने उस जगह को खरीद लिया। असल में एक जो इस नई सरकार ने किया है, जिसके लिए बहुत कई लोगों को बदनाम भी किया जाता है, कि 1951 में, मैंने 47 तक तो कुछ वहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन वो अपने आप में जगह तीर्थ स्थान जैसी बन गई थी। लोग हिंदुस्तान 47 तक भी, 1919 से लेकर 47 तक लोग वहाँ जाते थे अपने श्रद्धा के फूल अर्पण करने के लिए कि हमारे लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं। चाहे अंग्रेज़ों ने वहाँ यादगार नहीं बनाने दी, लेकिन अपने आप में वो यादगार बन ही गई थी। लेकिन वहाँ पे कुछ और कुछ नहीं किया गया था। तो पहली हिंदुस्तानी सरकार ने, मैंने 47 के बाद 1951 में पार्लियामेंट में नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951 बनाया और उसके तहत कहा कि ये हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली यादगार इसको रखा गया। उसमें जो ट्रस्ट बनाया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन के लीडर, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को, नॉट एज पर्सन, जस्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी रखा गया। आज उस बात की बहुत आलोचना होती है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड को नहीं समझा जाता। ये ज़मीन जो है कांग्रेस पार्टी ने ही खरीदी थी। मैंने 1923 में या 1920 में जब वो खरीदी गई थी ज़मीन, उसके बाद से भले ही गवर्नमेंट को ये दे दी गई थी मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, लेकिन उस बात को ऑनर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को एज एज ए सॉर्ट ऑफ सिंबल उसमें रखा गया था। कोई भी प्रेसिडेंट हो, किसी व्यक्ति को नहीं रखा गया था। आज जो है पूरा उनको बदनाम किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी को, नेहरू को बदनाम किया जाता है, मैंने ये सब किया जाता है। लेकिन ये फिर यादगार 1961 तक ही बनकर तैयार हुई थी। देखिए, चेंजेस तो ओरिजिनल शेप में उस वक्त भी की गई। ये नहीं कोई कह सकता कि अगर आप 1919 के फोटोग्राफ देखोगे उस जगह के, तो वो एक खाली मैदान है। आप जो ब्लैक एंड वाइट में फोटो देखते हो, उसमें लोग गिरे हुए हैं, मैंने उनके वो गोलियों के निशान भी हैं दीवार के अंदर। तो लेकिन वो दीवार वैसी नहीं है जो 1961 में भी बन गई थी। लेकिन कुछ चेंजेस उस वक्त शायद लाजमी थे, क्योंकि उसको यादगार बनाना था। क्योंकि जो एक बीच में जिसको मेमोरियल की तरह, एक सिंबल की तरह कहते हैं, वो गुलाबी रंग की जो बहुत पायलन कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, तो वो तो बनना ही था, वो बना उसका। एक ज्योति वहाँ पे बाद में बनाई गई, शायद 1961 के बाद बनाई गई। और दूसरा, जितने भी गोलियों के निशान थे उनको प्रिजर्व किया गया टेक्निकल तरीके से। और दूसरा, कुआं जो था, कुएं में कुछ चेंज नहीं किया गया। कुएं को भी थोड़ा जाली वाली लगा के, ताकि उसमें कुछ वो ना कर सके, लेकिन कुएं के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। तो वो उसको ही वैसे ही शेप दी गई। और जो एंट्रेंस थी, वो एंट्रेंस भी एक्चुअली मेरे ख्याल में, शायद टुटेजा जी बताएंगे या भंगू जी बताएंगे अगर इनको मालूम होगा, मेरे ख्याल में उस वक्त एंट्रेंस भी कच्ची ही थी। शायद वो दीवारें वगैरह नहीं थी, लेकिन बहुत तंग एंट्रेंस थी, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसी से, कच्चे रास्ते से ही वो आया था और उसने रास्ता बंद कर दिया था डैम, इसलिए लोग बाहर निकल नहीं सके। इतने सैकड़ों की संख्या में जो लोग मारे गए, इसलिए भी मारे गए कि उसको भागने का उसने मौका भी नहीं दिया। मैंने एक दीवार फांद के कुछ लोग कोशिश करे, बचे हैं कुछ लोग दीवारें फांद फांद के। दीवारें बहुत ऊंची नहीं थी, साइडों की दीवारें थी और वो सब पीछे जो अब आजकल हम देखते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे मकानों के वो बने हुए हैं, उस वक्त तो वो इतने सब नहीं होंगे, लेकिन जो भी था तो वो सब किया गया। तो ये एक यादगार के रूप में बन गया। 61 में ये यादगार बन गई थी। और दूसरी बात यह है कि ऐसी यादगारें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, काफ़ी लंबी उम्र होती है इनकी, अगर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखी जाए। माने एक इंटेक नाम की संस्था है, इंडियन नेशनल, वो आर्काइवल, उसको प्रिजर्व करने के लिए होती, वो हमेशा ये सारे काम करती रही है और उसने बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया हुआ है उसी शेप में जिसमें वो ओरिजिनल होती। तो इसको वैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रिजर्वेशन इसकी चाहिए थी। अगर मान लीजिए उसमें कुछ ध्यान नहीं रखा गया या उसमें नेग्लिजेंस हुई, या फिर कह सकते हैं कि मान लीजिए थोड़ी बहुत अगर उसमें कुछ सुविधाओं की ज़रूरत थी, उसके लिए ज़रूरी ये था कि उस एरिया को बिल्कुल कुछ ना छेड़ा जाता,
उस एरिया से अलग मैंने पढ़ा है या सुना है कि बहुत सारे नए मकान इस सरकार ने खरीदे वहाँ के आसपास के। जो आसपास खरीदी गई जगह थी, उस जगह में अगर कैंटीन बनानी थी या उसमें टॉयलेट्स वगैरह कुछ बनाने थे, वो सब उसमें बनाने चाहिए थे, ना कि बाग के अंदर। बाग के अंदर सुना है कि 4 गैलरीज बनाई गई हैं जैसे कि बताया गया है, वो भी मेरे ख्याल में सब बाग के बाहर करना चाहिए था। बाग के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए था। इट शुड हैव बीन प्रिजर्व्ड एज इट वाज क्रिएटेड इन 1961। इफ नॉट एटलीस्ट 1919 वाला तो शायद नहीं हो सकता था, 1961 वाली जो उसकी शक्ल सूरत थी, वो उसको वैसे का वैसा जैसे इंटेक हेरिटेज बिल्डिंग को करती है। मैंने लिखा भी है उसके बारे में, कई टीवी प्रोग्राम में कहा भी है कि बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए जितनी टेक्निकल ज़रूरतें थी, वो सारी टेक्निकल ज़रूरतें वहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए थी, और ताकि बिल्डिंग अगले 50 साल के लिए और ज़्यादा मजबूत हो जाती। और वो सारा आजकल पॉसिबल है। मैंने ऐसा नहीं कि ये कोई पूरी दुनिया में मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, हॉलोकॉस्ट के बने हुए हैं। केन्या में माओ मूवमेंट में हिंदुस्तान से भी ज़्यादा जुल्म हुआ था। केन्या में 25,000 लोग मारे गए थे माओ मूवमेंट में, उनके भी मॉन्यूमेंट बने हैं। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहाँ पे जुल्म के खिलाफ मॉन्यूमेंट ना बने। हमारे हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट था। ये तो इस तरह का मॉन्यूमेंट था कि जिसके लिए इतना ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत थी कि उसमें ज़रा भी कोई उंगली ना उठा सकता कि देखिए इसमें ये जो है वो चेंज कर दिया गया। लेकिन जब मैं 18 में गया था 2 साल पहले, तभी उसमें चेंजेस कर दिए गए थे। मैंने मुझे वो देखने में आकर्षक बन गया था। मैंने एक तरीके से ये चीज़ें आकर्षक बनाने के लिए, मैंने लोगों को ध्यान खींचने के लिए या लोगों को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती। ये लोगों के अंदर एक जो उस अपने इतिहास के प्रति, अपने एक उन शहीदों के प्रति एक तरीके से जो एक श्रद्धा का भाव होता है, उसमें लोग वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, ना कि टूरिज्म की जगह नहीं होती। मैंने अब जो हालत मैंने देखी है, जिस तरीके से लेज़र शो किया गया, जिस दिन इनाग्रेशन भी किया गया, वो तो इस तरीके से किया गया कि जैसे अट्रैक्ट किया जाए लोगों को। और वहाँ पे, और अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि 2 दिन में ही 50,000 लोग वहाँ पे विजिट करें। मैंने 50,000 लोगों ने विजिट नहीं किया, 50,000 लोग वहाँ घूमने गए। मैंने लोग बच्चों के साथ जाते हैं वहाँ पे, बच्चे वहाँ पे फैमिलीज के साथ जाते हैं दिखाने के लिए। हम लोग कहते हैं कि शहर में फलां जगह चलो देखने चलते हैं, मैंने किसी बाग को देखने चलते हैं, किसी कोई सुंदर जगह को देखने चलते हैं। हर शहर में एक रिवाज होता है, कोई मेहमान आता है तो कहते हैं, या वीकेंड पे लोग कहते हैं कि चलो यार वहाँ पे घूम आए। तो मैंने ये जो 50,000 लोग गए हैं वहाँ पे, ये उस तरीके से गए हैं कि जैसे वीकेंड हो या जैसे कुछ। ये तो बहुत ही एक तरीके से अपने आप में बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन। मैंने लोग घूमने की जगह उसको मान ली और बच्चों को घुमाने। मुझे नहीं ऐसा कुछ जिक्र मिला कि जिसमें टीचरों ने, अगर स्कूल के बच्चे गए हों और टीचर साथ में गए हों और उन्होंने रुक रुक के एक एक बच्चे को ये बताया हो कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ऐसे सब हुआ, या माँ बाप ने ही बच्चों को बताया हो कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ। मैंने एक हिस्ट्री बच्चे को सिखानी होती है बच्चों को, अगर उसके लिए वहाँ आप उसको लेके जाते हैं तो एक दूसरा तरीका है। लेकिन अगर आप घुमाने के लिए लेके जाते हैं, जो कि आप उसको थीम पार्क नाम दे रहे हैं, ये लोगों ने बहुत तरीके से उसको कहा है। तो ये मेरे ख्याल में जो 18 में भी मैंने देखा और उसके बाद से जो मैंने तो अभी तक देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन ब्रोशर में उसमें दूसरी चीज ये है, एक तो उस पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के साथ जो एक तरीके से कहना चाहिए कि जबरदस्ती की गई है, उसको बिगाड़ा गया है बहुत बुरी तरह से। ये बहुत अपने आप में खराब हुआ है। दूसरी एक और चीज जो हमारे हिंदुस्तान में हिस्ट्री के साथ और खास तौर पे ये पंजाब के 3 शहीदों के साथ इतना, जिसको कहना चाहिए कि मैंने किसी को शर्म भी नहीं आती इस बात को लेके, दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, वो शहीद भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। ये 3 पंजाब के ही ऐसे शहीद हैं जिनके फेशियल डिस्टॉर्शन की गई है लगातार। एक तो ऊधम सिंह, जहां जिनका बुत लगा है, एक भगत सिंह और एक करतार सिंह सराभा।
तीनों की शक्लों के साथ इतना बिगाड़ किया गया है, इतना डिस्टॉर्शन किया गया है। खुद पंजाब में भी किया गया, पंजाब के लोगों ने किया है, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है, पंजाब की रूलिंग गवर्नमेंट्स ने किया है, कोई भी गवर्नमेंट हो, और हिंदुस्तान की सरकार ने किया है, और हिंदुस्तान की पार्टियों ने किया है। मैंने भगत सिंह की सिर्फ 4 असली तस्वीरें हैं, जिसमें किसी भी तस्वीर में उसने ये ना जिंदगी उसने पीली पगड़ी पहनी थी, सैफरन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई उसने भगवा कभी पहना ही नहीं। सफेद खद्दर का कुर्ता पजामा और सफेद खद्दर की पगड़ी, ये उन दोनों फ्रीडम स्ट्रगल का लिबास था, दोनों का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी नॉन वायलेंस वाले, और चाहे वो रेवोल्यूशनरी थे जो चाहे वो वायलेंस को मानते हो या नॉन वायलेंस को ना मानते हो, लेकिन सबका लिबास सफेद खद्दर था। सफेद खद्दर एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन का चिन्ह बना हुआ था। तो वो गांधी जी ने क्योंकि अपने राष्ट्रीय चिन्हों पे जोर दिया हुआ था, तो भगत सिंह का भी लिबास जो था सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद पगड़ी, यही थी। लेकिन कोई पेंटिंग बन गई थी 50-60 में, तो उसमें उसको पीली पगड़ी पहना दी गई। उस असली शक्ल को छोड़ के सब लोग उस पेंटिंग बेस को, उसके बाद से तो इतनी बिगड़ी हुई पेंटिंग बनी, उसके बाद तो कभी उसके हाथ में पिस्तौल पकड़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी उसकी मूछें चढ़ा दी, कभी उसका कुछ। ही वॉज ए वेरी हैंडसम यंग मैन, इतना खूबसूरत आदमी था। उसकी पगड़ी वाली जो तस्वीर है सफेद पगड़ी वाली, वो भी इतनी खूबसूरत है, 17 साल की उम्र की है। और वो उसमें पुलिस स्टेशन में खुले केशों के साथ वो उसकी तस्वीर खींची हुई है, और लास्ट तस्वीर उसकी हैट के साथ खींची हुई है जो बहुत पॉपुलर हुई। उन सब तस्वीरों को छोड़ के इस म्यूजियम में भी, और मैं आपके भी ध्यान में ला रहा हूँ, जंगे आज़ादी में भी इतना डिस्टॉर्शन हुआ है कि पूछिए मत। मैंने उनकी सबकी शक्लें बिगाड़ दी। मैंने हरीश शर्मा से कहा भी था, मैंने कहा यार आप लोग दखल क्यों नहीं देते, आपसे बिना पूछे ये सब किए जा रहे हैं, मैंने पूरे शक्लें बिगाड़े जा रहे हैं शहीदों की, और उसके बाद से मैंने आप किसी को प्रोटेस्ट भी नहीं किया। आप डॉक्टर अम्बेडकर की शक्ल बिगाड़ कर दिखा दीजिए, नेहरू की शक्ल बिगाड़ के दिखा दीजिए, गांधी की शक्ल बिगाड़ के दिखा दीजिए, लेकिन बड़े आराम से लोग जो है भगत सिंह की, ऊधम सिंह की और करतार सिंह सरावत, तीनों की शक्लें बिगाड़। ऊधम सिंह की भी मैंने पूरी जो असली तस्वीरें वो सब के सब मैंने सोशल मीडिया पे भी जाहिर की है। डॉक्टर नितेश सिंह की किताब है, उसमें बहुत सारी असली तस्वीरें उसने लगा भी रखी हैं, जलियांवाला बाग पे, पंजाबी यूनिवर्सिटी में छपी हुई किताब है। ऊधम सिंह की ये शक्ल है ही नहीं, जो दाढ़ी लगा के नकली दाढ़ी लगाई हुई है, ऊधम सिंह के नकली दाढ़ी लगाई। ऊधम सिंह की सारी तस्वीरें क्लीन शेव, उसके ऊपर पगड़ी है, कई तस्वीरों में है, कई तस्वीरों में नहीं। जो पगड़ी है वो भी सफ़ेद है, मैंने ऊधम सिंह की भी पगड़ी सफ़ेद और अपने ही ढंग की उसकी पगड़ी है। लेकिन जो बुत लगाया गया है वहाँ पे, जो पूरे हिंदुस्तान में बुत लगाए जा रहे हैं, जो उसके गांव में सुनाम में लगाए जा रहे हैं, सारी सरकारें बुत लगा रही हैं, सबके सब बुत शक्लें बिगाड़ के लगाई। उसके ऊधम सिंह की कोई जो असली शक्ल वाला बुत है या तस्वीरें, वो लगाते ही नहीं। मैंने क्यों? आपने अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते किसी को सिख बनाना है, किसी को कंबोज बनाना है, किसी को जाट बनाना है, इसके चलते मैंने यहाँ तक हुआ है कि नवा शहर में जो शहीद भगत सिंह नगर आज उसको कहा जाता है, उसके गांव के पास है, 71-72 में ज्ञानी जैल सिंह की सरकार के वक्त में उसका हैट वाला बुत लगाया था। भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह वहाँ मौजूद थे। वो बुत 15-20 साल पहले वहाँ से हटा दिया गया, उसको हटा के उठा के कोई एसडीएम के दफ्तर में भेज दिया। वहाँ पे पगड़ी वाला बहुत ही अगली, इतना अगले लुकिंग बुत लगाया हुआ है नवा शहर में। लेकिन ये सारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते थे। मैंने जब से 20-25 साल से लोगों को हिंदुस्तानी या पंजाबी या शहीद या स्वतंत्रता सेनानी छोड़ के कंबोज और जाट और दलित, मैंने उसमें भी जातियों के 50 जातियों के नाम है बना के शहीदों के साथ वो बदसलूकी हमारी पार्टियां, हमारी रूलिंग पार्टियां ये सब कर रहे हैं, और जो हिस्ट्री के साथ मजाक किया जा रहा है, तो ये उसका शिखर है। यानी जो जलियांवाला बाग में किया गया है वो एक, जिसको कहना चाहिए कि उसका शिखर है डिस्टॉर्शन का। और वो मैंने जो सबसे बड़े आइकॉन को जब उन्होंने इतना डिस्टॉर्ट कर दिया, तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। पूरी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो रही है, राइटिंग में भी डिस्टॉर्ट हो रही है, और माइथोलॉजी उसकी बनाई जा रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक नया टर्म चल गई है कि जो सब डिस्टॉर्शन हो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो रवीश कुमार ने भी उसको बहुत पॉपुलराइज कर दिया टर्म को। तो ये
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से जलियांवाला बाग बना दिया गया। ये इतना भयंकर कांड है, ये इतना जिसको कहना चाहिए कि हमारे आज़ादी संग्राम के साथ इतना बड़ा अन्याय। मैं मेरे इतनी ही बात कहूँगा क्योंकि अभी मुझे 15-20 मिनट हो गए बोलते हुए, तो बाकी अब हमारे दूसरे साथी इस पे आगे बात करेंगे। Thank you, sir, for your enlightenment. Now I am requesting to Professor K.L. Tuteza to deliver his views how a historical place should be preserved, maintaining its spirit. If renovation is required at all, how it should be done, and is this transformation of Jallianwala Bagh into a theme park is justified? Now I am requesting to Professor K.L. Tuteza to deliver his views. Very much, and I'm indeed thankful to your organization for asking me to speak on this subject on which I have been working almost more than 25 years since 1994 or so. And I wrote some pieces also on Jallianwala Bagh, and the one of uh, which is the basic one that was published in Social Scientist in 1997. After that, I have been involved in one way or the other with this issue of Jallianwala Bagh. And today, the issue which you have raised and say, last 15 or 20 days or so, a number of scholars, some eminent journalists have already intervened in it, have already spoken about it, written about it, and Professor Chaman today also he made very valuable points. Of course, I would like to say something about but this is not a platform to talk for me on the Jange Azadi. But I would talk more about the Jallianwala Bagh. You know, first of all, let me start with this. That my whole understanding of Jallianwala Bagh is as a student of history. When I explored this subject, for me the issues were two. Why did people go to Jallianwala Bagh on 13th April 1919, and the force or the brutal force used by General Dyer? But today the question is slightly different. The question at that time for me was to understand it. But today the question is that incident of 1919, which became, to quote the words of Professor Chaman, has become an icon today. It is something which is always remembered. Professor Chaman said that it is remembered today as and when there is a brutal use of force against the non-violent protesters. It is generally said that Jallianwala Bagh is being repeated. So Jallianwala Bagh, in a way, is used today as an icon, where we say that it was something where force it became a symbol of use of force by the state against the common people. But I see the other way also, and I see it also the kind of sufferings made by the Indian people in the anti-imperial struggle, and how that understanding of the sacrifices of the people at Jallianwala Bagh on 1919 became an icon for the people to use it as some kind of symbol against the colonial state. And I remember that I had given one instance that, I mean, there were many instances when Jallianwala Bagh was invoked in history, but I remember a friend of mine told me that in 1921,
A play was enacted in Andhra Pradesh, and in a village, the play was that how Dyer used force against the people who died there. Now, so the issue is that Jallianwala Bagh would be remembered always for two things. One is the sacrifices made by the people, and also how it also represents the brutal use of the force by the state against the protesters. Now, the question is today, what the Indian state has done today, is it a renovation or it is a restoration? Let me say one thing. Restoration would always remain a part of human society because we want the heritage to be preserved. All, but I would just say here to my very dear friend Professor Jamal, there's a difference between maintaining a place of heritage and and creating a museum. Museum is something different. Here, there is a place which was used by the people for common purposes. Now, the question is, while renovating it, how the state has compromised, as the anchor has said, its spirit. Heritage is always preserved and restored. It is restored and preserved. It is not renovated. Let me say one thing. I think some examples are already there in history. I remember I have seen Professor Chamalal was also in Trinidad. I saw a small island, Nelson. Nelson Island was used by the Britishers for quarantining those Indians who were coming as indentured labor and those were placed there. Even today, there is no major change. Similarly, on the other hand, you see how the museum is created. For example, in USA, I saw it in a program, and that was by a very authentic journalist, and for whom I have deep respect, Ravish Kumar, and that was a museum in America on oppression by the white people on slaves before 1860. And what they created there was the use of force, was the use brutal oppression by the white people on the blacks who were treated as slaves, and those were shown. And see some of the structures in England, or as you put it, in different parts of the world, where the structures have been preserved. There may be some changes inside, but here in Jallianwala Bagh, what has actually happened? The structure, the spirit of the spirit, if the whole Jallianwala Bagh has been compromised. Renovation, all every I mean, after 25 years, 30 years, 50 years, this the effort of the restorations would go on because we want to preserve our heritage. And in that process, now let me honestly say, when you use the bullet places, I've not visited in last 1.5 year Jallianwala Bagh. I have not seen the recent, but some of my former students at Amritsar, very dear colleagues, have sent me some information, and I saw all that. Now, what is very important is, I'll just point out two or three things. If the spots which are shown of the where the bullets were marked, earlier those places were just marked. Now what they have done, they have also put glass on it. Okay, it's all right. Because you are not compromising with the place
where it is shown that the there were specific places of bullet, and that also shows that bullets were not fired in the air. Bullets were directly fired in a way that, the intent was to kill the people. So up to this I agree. Now second thing is the what we call in Punjabi khum, that is well, and it is very rightly said that the spirit of the well was, what was the what was the significance of uh, well, what is the significance of well in Jallianwala Bagh incident? The, as Professor Chamanlal put it very rightly, it was not a Bagh in the present sense of the term. It was not a place where it was like a Maidan. It was like a field where people would come and sit, and a very small passage for going inside. If you see the city itself, while working on Jallianwala Bagh, while writing on, I visited all the Katras and all that. What is significant is that here is a place adjoining to Darbar Sahib, which was used for many purposes. And one important purpose is that people would come and hold meetings, protest meetings. Now the issue is that if you see this, if you see uh, s- the whole nature of the city, this was a common place. Now, who, as he rightly put it, could have been used. I don't know about it. That probably it was also used for taking water wherever the people needed it. But what is important is this well, people ran. Possibly some people accidentally died. Some people jumped in order to save themselves. But what is important is the well is a symbol of the sacrifice of the people. The question is, when you cover it, when you just cover it with the glass, possibly you are depriving those who visit today, are unable to understand, are unable to see the spirit or to get the real spirit of the sacrifices of that place. There could have been different methods. In order to preserve that well, there is so much of technology that people say that today the people sometimes throw coins, etc. You could have used many ways in order to protect it. My my take on this is that what was more important is not to put a glass on it, but to maintain its original spirit by making more scientific methods to keep the structure as it is, without, keeping also the points of the restoration in mind. So this is the second point which I am making. Third point, today, as Professor Chamanlal said earlier, Udham Singh's statue was not there. You know, as Jallianwala Bagh, if you see my writing on it, I have started from before 1919. I have gone to the whole understanding of the colonial state. But what is more important is we have to relate it with the Rowlatt Satyagraha. And what were the three basic aspects of Rowlatt Satyagraha? One basic aspect of Rowlatt Satyagraha was the kind. I'm not discussing here history, but what is important is Rowlatt Satyagraha represented the protest of the common people against the oppressive state machinery of the state. The state had enacted a law, and that law was going to create those conditions which would have made the life of the people miserable. And to quote Sumit Sarkar, it would mean more use of force against the common people by the police. So, if at all you wanted to bring a change in it, you should have done something either showing the Gandhian call for Rowlatt Satyagraha. What was the object of Rowlatt Satyagraha?
Why did the common people think on those lines of protesting? If you see I have seen the meetings which were held in different parts of Punjab, even in Amritsar before 30th April. Now this is something very important. Actually, actually, if you see 2 days before, we just 2 days before it's a major. I mean, sorry. If you see the incident of if you see the incident of 11th, when the people were marching towards civil lines on two bridges, firing took place, and the Indian protesters died. The question is, the persons who visit inside, they do not know anything. The persons who were killed 2 days before. If at all you are bringing some renovation, don't show us light and sound program. Don't show us just a memorial. Show us how the people suffered in that whole environment. So this is my major issue, that people's sacrifices have not reflected in this program of quote unquote renovation. Third, the spirit of this Jallianwala Bagh, one more important spirit was communal harmony. If you see the whole movement from February onwards, there was not a single meeting where the slogans were not raised, Hindu, Muslim, Sikh, Bhai Bhai. And even 2 days, even when Miles Irving, who was writing, who when requested for the force for asking for the army to come, you know what happened? Am I audible? Am I audible? So what happened, that he writes that except Kotwali, the whole of Amritsar in the hands of the rebels, quote unquote. And one important sentence is, people used to say, it is from the CID report. 2 days before they said, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ. Now this shows the spirit of a kind of achievement that the British hegemony had been eroded. So if you wanted to show in your renovation anything, you could have shown the spirit, how the colonial fear was over now. You could have shown how the people did not fear British Empire anymore. And those who went there, 20,000 people, were not just spectators. They had gone to protest against the British, and that is why when the police when the sepoys fired, they said "Phokiyan," that they were just blank. The point what I am making is, it's a renovation for the tourist, where you show light and sound program, where you beautify the memorial, but the essence of Jallianwala Bagh is compromised, and that compromise is at three places which I consider are very, very important. One important point is, the spirit of the sacrifice of the common people is missing. People who go there will not be able to understand why the people went there, and the very fact, the passage, I mean, there is so much of distortion in the passage. I believe that the wall must have remained in the same way, because wall could have given the impression how bad was the situation. But when you show people going in the park, taking children along with them, just having a spirit of laughing and all, that was not the case. People had gone there to protest. Already there was a martial law in the city. So if at all you wanted to show, you should have shown something, a kind of resentment on the face of the people. So my whole take is,
Restoration is the essence of maintaining any heritage, place of heritage. Renovation is entirely different from restoration. The moment you use the word renovation, the spirit is compromised. And what the state has done today, they have compromised. They have not shown the spirit of the people to fight against injustice. They have not shown the brutal use of the force by the state. They have not shown the communal harmony that was there. If at all something was to be shown, and there is a violation of the spirit as far as the well is concerned. So I stop here, but I would just add and say to my very dear friend about the Kartarpur Museum, sir, I have not visited that. My job or our job was to prepare a concept paper. We write in concept paper even for Jallianwala Bagh. Not today. At one time, I was a part of the concept paper, but I was withdrawn. I was thrown out. It was 4-5 years back. Not even the present government had come. It was during the period of Manmohan Singh. That, the purpose of that was to depict the freedom movement in a proper perspective. How today even the basic point is that when the state does not have the understanding of history, when the state does not use the facts of history, the renovation would be there would be more distortion in renovation, and restoration would be compromised. So therefore, I end my presentation by saying that I would always favor the attempts made by the state to restore any place of historical heritage in a proper manner. While restoring the heritage, we need to keep the spirit in mind. And the spirit of Jallianwala Bagh were three: the rebel spirit of the people to protest against the state. Second was the communal harmony. And the third was the brutal use of the force by the state. Have we compromised with this spirit? If the state has compromised, and the state has compromised, so therefore I consider it is a dangerous trend, and it is not actually, we are compromising with our heritage, and it would set a wrong example. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Can you hear me? Yes, sir. Thank you for your. Yes, I have done. I've completed. If there is any person who would like Yes, to sir. ask me in Hindi or English, I can reply later. Yes, sir. Actually, we have requested to our viewers, if they have some relevant questions, they can put it in our comment in their comment box, so that we will put it to you also. Okay. Thank you, sir, for your enlightened talk. Now, I am requesting to Sri Son Singh Bhangu to deliver his views. Now, I would like to request him that he should speak in Punjabi for our viewers. It would be helpful. So now I am requesting to Sri Son Singh Bhangu to place his views. ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज सुन रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਐਲ. ਟੁਟੇਜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਟੁਟੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਰੀਏ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਾਲੂ ਜਾਂ ਜੈਬਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡ ਟਾਈਪ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਲਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨੋਂ ਮਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਊਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੇਰੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਨਰਲ ਟਾਇਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਜਯੋਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 70 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ 120 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਸਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਰੂਆ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਝਲਕਦਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚਮਕਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸੱਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। Thank you, Son Singh ji. As we don't have any relevant questions in our comment box, we have to conclude our online discussion here. We and our viewers, we have listened to the discussion, this online discussion. Our speakers discussed the problems, discussed the spirit of Jallianwala Bagh, discussed the evil design of transformation of Jallianwala Bagh into a theme park from different angles. Our viewers are also enlightened with this discussion, and we hope our movement will strengthen further with this. Lastly, I want to say that we know the RSS and the predecessors and mentors of BJP not only opposed the freedom struggle of India, but also helped the British to suppress it. Now the BJP is implementing various anti-people acts like agricultural laws against which farmers are protesting since 10 months. BJP government is enacting different labor codes in place of hard-earned rights of laborers. It is implementing National Education Policy 2020 to ruin the education, to destroy the education, not only its content but also its spirit also. BJP government is working with National Monetization Pipeline and many anti-people acts and laws. It also crushing the protest movements in the interest of monopolies. Hence, there is a similarity. In Jallianwala Bagh, there is a united protest, and British imperialists tried to suppress that protest. Nowadays, common people are protesting against anti-people policies, and the government is trying to suppress this movement. In this condition, they are corporatizing the monuments with a commercial intent. They are trying to reap some profit from monuments
and historical places on one hand, and they are trying to erase the history on the other. In this critical hour, All India Democratic Students Organization (ਏ.ਆਈ.ਡ) is organizing a signature campaign against this evil design of the government. From this online discussion, I would like to request all of our viewers to sign this signature form as a mark of their protest. This signature campaign we are organizing for 1 month. It has been started from September 5th. It will continue up to October 4th. After that, we will submit this signatures and memorandum to the Honorable President of India. To strengthen this movement, I would like to request our viewers to remain with us, support All India Democratic Students Organization. Those who are the students of different schools, colleges, and universities, they should enroll as a member of All India Democratic Students Organization (ਏ.ਆਈ.ਡ) and jointly and unitedly we will fight against different injustice and oppression. Throughout the country, ਏ.ਆਈ.ਡ is working. In Punjab also we are working in different districts. We hope this movement will continue further, and one day we will win. Victory will be always ours. At last, I would like to thank all our distinguished guests for their awesome talk. I would like to thank Professor Chamanlal, Professor K.L. Tuteja, and Sri Son Singh Bhangu for their participation, for their awesome talk. Thank you to all of you. Thank you. Thank you.